अमन के हम रखवाले, सब एक है अमन के हम रखवाले। Hello again. 54 days and Manipur is still on the boil. We call ourselves the Seven Sisters of the Northeast. And when one of our sister states is burning, how can we keep quiet? How can we not react? Let's have a look at what has been happening since the last time we met. On Saturday, 24th of June, Mr. Amit Shah, our Home Minister, called for an all-party meeting. So Amit Shah ने all-party meeting बुलाया दिल्ली में, और इससे क्या निकला? 1949 में जब मणिपुर भारत के गणराज्य का हिस्सा बना था, कभी नहीं मणिपुर के लोगों ने सोचा होगा कि ये दिन उनको देखना पड़ेगा। Well, one thing is very clear, and he made it very clear, that President's rule is not going to be imposed on Manipur. You are also aware that Chief Minister Biren Singh is not going anywhere. So दो चीज निकला है, पहला कि President's rule होने के कोई संभावना नहीं है, और न तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह वहां से हटाया जाएगा. Okay, so let us look at what has been happening over the last few days. On the 24th of June, Saturday, we see that thousands of protesters from the Kuki community, they gathered outside Churchandupur's Lamka Medical College. यह मार्च मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के शोक में आयोजित किया गया था और बचे लोगों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करना कि 106 लोग मारे गए हैं। हमारे समुदाय के 201 गांव जला दिए गए हैं, 262 चर्च जला दिए गए हैं, 93 चर्च की प्रशासनिक इमारतें और क्वार्टर जला दिए गए हैं और 41,425 लोग विस्थापित हो गए हैं, जो वर्तमान में 204 राहत शिविरों में रह रहे हैं। The Assam Christian Forum, it represents different denominations, different churches. So they came together in order to pray for peace and to demand. And we are looking forward not only to the government, but we are looking to the opposition parties also to bury their differences. It is not a time to pick up what is the tutu maime game is not to be put. Here human lives are concerned. And Manipur is an integral part of the country, and we want everybody to put their heads in and stop the violence. हमें पता है, as we know, also here in Patna, on the 25th Sunday, the next day, we people, citizens of Patna, अलग-अलग लोग पटना के शामिल हुए और एक silent march organize किए. There was a silent march which happened in Patna, the capital of Bihar. So we saw that. At the same time in Jharkhand, now according to Vimarsh News, I have a clip from Vimarsh News for you. Even in Jharkhand, people gathered at Albert Ekka Chowk. So Albert Ekka Chowk, Jharkhand में जो था, वहाँ भी लोग शामिल हुए और मणिपुर के मुद्दा में उन लोग बातचीत किए, उन लोग की प्रदर्शनी किए, उन लोग मार्च किए. जिस तरह से आज हमारे देश में जो मणिपुर में हो रहा है, वो मणिपुर में जो घटना घट रही है, आज मणिपुर जल रहा है जाति और धर्म के नाम पर, लेकिन हमारे देश के जो मालिक हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं और देश के जो सिस्टम है, जिसमें हमारा गृह मंत्री भी आते हैं अमित शाह जी, मणिपुर को जलने दे रहे हैं. मणिपुर में जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ में वो चुप्पी साधे हुए हैं. Now, a very interesting thing happened on the 24th of May during Amit Shah's meeting. अब क्या हुआ? What's interesting? We know that many arms, ammunition, guns, वगैरह were looted from police stations. So according to the data given by Amit Shah ji, around 1800 weapons have been returned. वो ड्रॉप बॉक्स में उन लोग 1800 weapons
रिटर्न हुआ या फिर पुलिस ने सीज किया उसको. बट according to estimates, more than 4,000 of these arms, AK-47 sophisticated arms, were snatched or stolen from their police station. The Sarkar does not have the figures, cannot give us the figures as to how many arms, how many guns were stolen. And सरकार ये फिगर्स क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये सुनने में आया है, या कम से कम न्यूज़ में तो ये आया है कि जो रजिस्टर्स है, जो डेटा है, जो रजिस्टर्स था, वो भी पुलिस स्टेशन से गायब हो गया है या फिर जलाए गए हैं या डिस्ट्रॉय किए गए हैं. तो ये एक अच्छा पहलू है. आप समझदार लोग हैं, आप सोचिए ये किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है, शुरू कैसा हुआ. Is it possible to destroy 247 churches in highly populated areas on clinical precision? People are being killed out in the open, cold-blooded murders, police stations looted, army workers looted, and if you don't act, that gives a sense of impunity that we can do whatever we want. Who has made the Indian army puppets in Manipur? Now, this is what concerns me as a journalist, as an Indian. I do not know whether you are aware that the Indian army has also put out a video. And a video that I am going to play for you. Watch it. And then we'll come back to this story. सेना ने मणिपुर की तथाकथित महिला कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है कि वे सशस्त्र बलों की मानवीयता को कमजोरी न समझें। इसमें कहा गया है कि मानपुर में महिलाओं के नेतृत्व में शांतिपूर्ण नाकेबंदी मिथक है। महिलाएं दंगाइयों को भागने में मदद करती हैं। दंगाइयों की गोलीबारी के दौरान वे सुरक्षा बलों को रोकते हैं। वे हथियारबंद दंगाइयों के साथ हैं। खमनलोक में दंगे भड़कने के बाद महिलाओं की भीड़ ने आगजनी शुरू होने से पहले ही सशस्त्र बलों को रोक दिया। महिलाएं दिन रात कामकाज में दखल देती हैं। महिलाएं दिन में और रात में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में दखल देती हैं। सेना ने चेतावनी दी है कि सशस्त्र बलों की आवाजाही को रोकना न केवल गैरकानूनी है, लेकिन कानून एवं व्यवस्था बहाल करने के उनके प्रयासों के लिए हानिकारक है। Now, if you look at the army's video, whatever is happening in the Imphal Valley, where we have the Maiti Lipun and the Arambai Tengal. Now, ये दो Maiti Lipun and Arambai Tengal ये militant groups है. इन groups के जो women है, इन groups के जो महिलाएं हैं या इनको supporting महिलाएं हैं,
हम शायद इस पर अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरा सिलसिला में. We are at a border state where 3,000 plus kilometers are with the rest of the world, and where we have 60,000 troops on the ground, and you are telling me that we cannot control the crowds. This is something which is worrying us at the present moment. Actually, what is very worrying is that we are not looking at an ordinary conflagration या दो लोग के बीच में कुछ हो गया है. हम लोग देख रहे हैं कि ये नफरत की राजनीति किस तरह से इस पूरा एरिया में फैल रहा है. Anto Akra is a journalist of international repute, and he has been talking to a channel in South India. I am showing you a few excerpts, and of course all the links to whatever I've been discussing will be down below in the description box. So then came a group of people from the Meitei Christians, their leadership called Meitei Christian Council. They said that, during this violence of first called the initial time, May 3rd night and 4th night, 247 churches were destroyed. So that was never heard before. So the fact is that, there was cookies were saying we are 40 churches there, because whatever that was cookie was targeted. Similarly, whatever that was Meitei was targeted in the cookie areas. Both sides. We cannot say one is better or the other. That is more or less equal. In the sense the targeting was vicious. Because it's an ethnic element is there. But what the Meitei leaders said is shocking. Because if this is a conflict between cookies and Meiteis, why should the Meitei churches be singled out? Now, my problem is different. I'm different in the sense, if you go deeper, if you look at it, you analyze it very carefully. Is it possible to destroy 247 churches in highly populated areas on clinical precision? So that means there is elaborate preparation. There is what we call in our political language surgical strike. हमारे सामने एक चुनौती है कि हम ये पीस किस तरह से हम लाए, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी जटिल है. हम लोग को इन्फॉर्मेशन है, ये मैं दूसरा प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा. I will talk about this in another program. It is very difficult to actually get relief to certain villages because there are people who stop the trucks, stop the relief, either beat the people up or loot them. So this also is another problem. How to get relief to certain areas in Manipur. That also is a big problem. So these are challenges. We'll talk about the challenges maybe in another episode. In the end, what can we say? हम क्या कर सकते हैं? The situation is very, very difficult. It is bordering on civil war. So we have to wait, watch, but more important, we have to raise our voices and we have to try our best to become peacemakers in this situation. अमन के हम रखवाले सब एक हैं अमन के हम रखवाले.